This meeting is being recorded. Hello, good evening, Terkhedkar ji. Thank you so much for joining the session on time. Let's wait for our entire AccuCheck Wealthy family and then we can start. Meanwhile, how is your health? I hope your blood sugars are under control. You're taking care of your health. How is your health coach support? I would love to know from you. Let me know when are you free. I would love to connect with you and have a discussion with you just to understand how is my team supporting you, how is your feedback about the program. It is something which will help us actually work better and help you better personalize your journey in a more one-on-one customized basis. Hello, hi, good evening. I can see some of you have joined from your phone. It would be great if you can drop in your names in the chat box. I can address you with your name and we can have a one-on-one conversation. Hello, Ashok ji, good evening. Thank you so much for joining today's session. I'm sure you're going to like today's topic because this is something you were asking me in the last few weeks. So we are going to discuss about that today. Welcome today to today's session. Let's wait for all our AccuCheck Wealthy family and then we'll start with today's session. Hello Sanjeev ji, good evening. How are you? कैसी है अभी तबीयत आपकी? I hope you're taking enough care of your health. हेलो यादव जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल. Let's wait for all our AccuCheck Wealthy family, all our members, and then we'll start. Hello Sanjeev ji. Sure, thank you so much. Let's wait for our participants, let's wait for our members, and then we'll start with today's discussion. Today's discussion is very unique. ये topic हमने पहले कभी भी discuss नहीं किया है. So I thought we should pick this conversation up क्योंकि काफी सारे diabetic patients को blood pressure related भी questions होते हैं. So we'll be discussing about that today. I'll discuss about the topic shortly. Hello Prakash ji, good evening. Thank you for joining today's session. I hope you're doing well, you're taking care of your diabetes. Hello Mr. Harshal, good evening. Thank you so much for joining today's session. Hello Manasa, good evening. Thank you for joining today's session. Let's wait for a minute more and then we'll start with today's topic and discussion. All right, so the wait is over. Today's topic is going to be a unique one because we have not discussed about this information before. So I want to understand from each one of you, what do you exactly understand by monitoring of blood glucose? What do you exactly understand by
low or hypoglycemia, and what do you understand by hyperglycemia? If you can tell that to me, that is something we can start the discussion with. So can you drop in the chat box what do you understand by hypoglycemia and what do you understand by hyperglycemia? Hypoglycemia and hyperglycemia. I would love to know what is it, does that mean, and what is it exactly about? Yes, I'm waiting for responses from each one of you in the chat box so that we can discuss this in detail. Hypo is low sugar, hyper is high sugar. Great. Thank you so much for sharing. Hypo is low sugar. Okay. Hyper, hypoglycemia and hyperglycemia. What does that mean? Yes. Hypo, low sugar, hyper, high sugar. Very well said. Thank you so much for sharing this information. I'm very happy to have such knowledgeable users in today's session. Okay, so just give me a minute. I will share my screen and then we can start with today's discussion. Yes, so today's topic is unique. We are going to discuss on various sections of blood sugar management and how blood pressure also plays a part in this. So this is exactly what happens. Blood sugar is a roller coaster ride. Okay, it has a lot of ups and downs depending on your choice of food items, the lifestyle you have maintained, your eating habits, what is it that you're doing on a routine to ensure that your blood sugars are maintained. Blood glucose level range. Okay, what does this mean? I just asked each one of you. A simple diagrammatic representation will help you understand. Okay, see this hypoglycemia. Okay, what does this mean? The sugar globules in your blood are less. Normal level, they are in the moderate numbers. And hyperglycemia, they are in high numbers. शुगर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है आपके ब्लड में, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं. ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है. ओके, तो आप अपना रिपोर्ट भी देखेंगे तो उस पे लिख के आता है हाइपरग्लाइसीमिया. व्हाट डज दैट मीन? हाई ब्लड शुगर. हाइपोग्लाइसीमिया उसका मतलब क्या है? लो ब्लड शुगर. नॉर्मल लेवल्स मतलब क्या? योर बॉडी इज एबल टू सस्टेन ऑन नॉर्मल levels. Let us understand fasting, post meal, after eating, what are the normal and diabetic ranges. Okay, normal ranges of fasting range between 70 to 130, on a higher range for a diabetic, but on a normal range for a non-diabetic, they range between 70 to 100. Impaired glucose is between 100 to 125, and diabetic is anywhere above 125 of blood sugar reading after eating, immediately after eating. Okay, so this is not your pp reading, this is not postprandial, this is within 30 minutes of eating. It should be 170 to 200, 190 to 230, or 220 to 300. Now, postprandial. What do you mean by postprandial? 2 hours after eating. It has to be in the normal range for a normal individual who has never been a diabetic, 120 to 140. Impaired glucose मतलब आप border line पे है, आपको होने की कोशिश है, so that is 140 to 160, and for a diabetic it is anywhere above 200 blood sugar levels. Hyperglycemia. Now, what is hyperglycemia? Okay, hyper का मतलब है ज्यादा होना, high होना. ठीक है? Any person who has a blood sugar of more than 180 to 200 mg per dl 2 hours after eating, or early in the morning fasting, empty stomach of 8 to 10 hours, is called as hyperglycemia.
Okay, now there are few common signs and symptoms which are seen if the patient has high blood sugar levels. Hungry, काफी ज्यादा भूख लगना, टायर्डनेस, थकान महसूस होना, थर्स्टी, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ड्राई स्किन, स्किन बहुत ड्राई फील करना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम यूज करना, ब्लर्ड विजन, जो भी आप सामने भी देख रहे हैं कोई चीज उसको क्लियरली नहीं देख पाना. ओके, hyperglycemia is the technical term for high blood glucose, that is blood sugar. High blood glucose happens when the body has too little insulin or when the body can't use insulin properly. तो दो सिनेरियोज होते हैं. पहला सिनेरियो जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी जो है उसमें इंसुलिन तैयार ही नहीं हो रही है, आपकी पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रही है. या दूसरा सिनेरियो ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बना हुआ है बट योर सेल्स, योर आरबीसीज आर अनेबल टू अब्सॉर्ब दैट इंसुलिन. हाइपरग्लाइसीमिया मैनेजमेंट एंड मेडिकल इंटरवेंशन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. काफी ज्यादा शुगर बढ़ने से भी चक्कर आ सकते हैं, अनकॉन्शियस आप हो सकते हैं, आपको बहुत थकान महसूस हो सकती है. ओके, your blood glucose levels if stay above for 240 mg per dl, you have symptoms of ketones in your urine. Please टॉक टू योर डॉक्टर. अगर कंटिन्यूअसली आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी खाने के बाद आपको डायरिया का सेंसेशन हो रहा है, बहुत समय से 1 से 2 दिन से ज्यादा आपको अगर फीवर है, ओके, ब्लड शुगर्स हमेशा जब भी आप चेक कर रहे हैं इट इज गोइंग अबव 200 और 220 डिस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल योर मेडिकेशंस ऑन टाइम, please speak to your doctor. Okay, very important. सबसे पहली तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लड शुगर जब तक आप चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा हाउ मच इज इट एंड हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू नीड टू चेक इट. इसीलिए हम बार बार बताते हैं आपको कि मिनिमम हफ्ते में 2 बार फास्टिंग और 2 बार पोस्ट मील ब्लड शुगर और 1 बार कभी भी रैंडम ब्लड शुगर चेक करना जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड, it is essential for you. Till the time you don't understand what problem your body is facing, you cannot help it, neither can your doctor. So please ensure you at least check your blood sugars twice in a week. हाइपोग्लाइसीमिया, अभी हमने ये तो देख लिया कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या है. व्हाट इज हाई ब्लड शुगर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लो ब्लड शुगर. ओके, डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया, व्हाट डज दिस मीन? Hypoglycemia is a condition that is caused by low blood glucose levels. Glucose is the main way your body gets energy. The condition is most common in people with diabetes who have issues with medicine, food, or exercise. But sometimes people who don't have diabetes can also get low blood glucose. आपको एक common example मैं देती हूँ. बचपन में when all of us were kids, whenever we had skipped our breakfast or forgot to have our lunch on time, and there was a big break of say 6 hours or 8 hours or even 5 hours for that matter, we immediately felt tired. एकदम ज्यादा थकान महसूस हो जाना, चक्कर का फीलिंग आना, डिजीनेस लगना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको दिखेंगे. ठीक है, कॉमन कॉजेस हैं हाइपोग्लाइसीमिया के. medication taken improperly, medication without food, skipping meals, alcohol consumption, kidney issues, hepatitis, okay, excessive physical activity, and overproduction of insulin. These are the common things or main causes because of which a diabetic patient can feel hypoglycemia. Let us understand what are the mild to moderate symptoms or you can say warning signs हाइपोग्लाइसीमिया होना. सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी कहा,
ब्लड शुगर चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. It is essential that each one of you keeps checking blood sugar on a timely basis. Number one. Number two, blood sugar when drops under 70 mg per dl, it is usually called as hypoglycemia. It is important to know कि hypoglycemia के symptoms क्या है. शेकीनेस, हाथ पैर कांपना, रेस्टलेसनेस, नींद में आपको रेस्टलेस फील होना या सो नहीं पाना, सोने के इश्यूज होना, फीलिंग कोल्ड एंड क्लैमी, ब्लर्ड विजन, काफी ठंडा महसूस करना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन महसूस होना या इरिटेशन होना, फास्ट हार्ट बीट आपके दिल की धड़कन काफी जोरों से होना, लैक ऑफ एनर्जी, even if you have slept for 6 to 8 hours you will still feel very tired, you will feel no energy is there and you will just feel stressed throughout the day. Pale skin, okay, hunger along with nausea due to hunger, बार बार भूख लगना लेकिन खा नहीं पाना because of bloating, because of nausea, feeling anxious, बहुत जल्दी anxiety feel होना. These are the common symptoms which you see in a hypoglycemic person. Now, diabetic hypoglycemia occurs when someone with diabetes doesn't have enough sugar in his or her blood. Glucose is the main source of fuel for the body and brain, so you cannot function well if you don't have enough amount of glucose. For many people, low blood sugar is a blood sugar level below. जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, blood sugar अगर 70 mg per dl से नीचे जाता है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से या अपने नर्स से कांटेक्ट कीजिए. लो शुगर होना एक डेंजरस बात है, उससे आपको और सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस की भी इश्यू हो सकती है. कभी भी आपको ये लगे मेरा ब्लड शुगर 70 के करीब भी है, अगर 75, 80, 72, 70 इस रेंज में भी है, इमीडिएटली आपको आपके डॉक्टर को या नर्स को बताना है. जैसे मैंने आपको कहा कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है. सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स that require emergency care. Make sure your family, co-workers, your friends are aware you are a diabetic and you are on medications. इसीलिए आपको टाइम टू टाइम खाना खाना, कोई भी मील स्किप नहीं करना, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना बहुत जरूरी है. People around you who stay with you, your family, your friends, your co-workers, आपके ऑफिस में जो भी लोग हैं, आपके कलीग्स, इन सबको पता होना चाहिए आपको कोई हेल्थ इश्यू है, क्योंकि वो इमरजेंसी में पता हो उनको कि आप इस तरह के मेडिकेशन या इंसुलिन ले रहे हैं. ठीक है. अगर कभी भी उनको ये महसूस हुआ कि आपको चक्कर का फीलिंग आ रहा है या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, so if they are aware of your health issues, they will be immediately able to help you and guide you on what needs to be the next step, or take you to a nearby clinic, or inform your family members, or help immediately wherever required. सम इमरजेंसी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए या आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनको पता होना चाहिए. ओके. Don't inject insulin as this will cause blood sugar levels to drop even further. Don't give fluids or food because they could cause choking. Give glucagon by injection or a nasal spray. Call emergency services in your area or a nearby doctor. Okay, if you don't know what needs to be done. If you have symptoms of hypoglycemia many times, तो हमारे पास काफी ऐसे यूजर्स हैं जिनके लिए हाइपोग्लाइसीमिया होना बहुत कॉमन है, क्योंकि काफी सारे रिलीजियस चीजों के वजह से भी लोग फास्टिंग करते हैं, काफी सारे
शहरों में ये भी होता है कि लंच हम स्किप करते हैं, हम सुबह काफी भरपेट हैवी नाश्ता करते हैं, दिन भर ऑफिस में होते हैं, रात को आके वापस खाना लेते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हमें बंद करने होंगे। हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। कैन आई हैव चॉकलेट्स, मॉल्टेड ड्रिंक्स इफ आई हैव हाइपोग्लाइसीमी? ये काफी सारे पेशेंट्स है जो खुद के पास एक चॉकलेट रखते हैं। मैं ऐसे सजेस्ट करूंगी कि चॉकलेट के जगह पे अगर आप शुगर का सैशे रखेंगे तो वो जल्दी आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है। अगर आप अनकॉन्शियस फील कर रहे हैं उतने में आपने चॉकलेट या कोई मीठा बिस्किट या दूध या ऐसा कुछ जूस ले लिया तो इट कैन बी अ लिटिल डेंजरस, क्योंकि वो टाइम पे वी आर